बेहद की परम शांति, बेहद की परम महाशांति। बापूजी, माँ, आनंद भाई, नीरू दीदी, साक्षी बहन, सबको परम 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 महाशांति। बेहद के परिवार को, मेरे बेहद के भाई बहन सबको बेहद की परम परम महाशांति। बहुत दिन से मेरे मन में एक चल रहा था आत्मस्वरूप के बारे में। बापूजी और माँ ने बहुत बढ़िया ज्ञान दिया और आत्मस्वरूप में रहकर हम बेहद कला ब्रह्मांड में जाकर बेहद के पावर हाउस से पावर लेके अपने शुद्ध संकल्प बेहद की परम महाशांति चारों तरफ वायुमंडल में फैला रहे हैं और बेहद की स्व परिवर्तन, तत्व परिवर्तन और बेहद के विश्व परिवर्तन के लिए हम निरंतर प्रयास रहते हैं और निरंतर हम ये अभ्यास कर रहे हैं। एक साइंटिफिक तरीके से इसको कैसे मैं एक्सप्लेन करूं, वो मैं 2-3 दिन से मेरे मन में ये चीज़ चल रहा था, संकल्प यानी कि क्वांटम कोरिलेशन ऑफ आत्मस्वरूप सुपर इम्पोज्ड विथ परम शांति संकल्प। एक क्वांटम थ्योरी के हिसाब से, क्वांटम कहने का मतलब जैसे अणु, परमाणु, जो इलेक्ट्रॉनिक एक सब एटॉमिक पार्टिकल स्टेज में अपना जो आत्मा जो है ना, आत्मा आप जानते हैं एक बाल के नोक पे इसकी 1 मिलियनथ ऑफ है भाग, जो कि सोर्स ऑफ लाइट, अल्टीमेट जो फाइन दिस थिंग। हम एक अपने आप को एक आत्मस्वरूप यानी कि एक इलेक्ट्रॉन के तरह सोचेंगे। इलेक्ट्रॉन जैसे न्यूक्लियस के चारों तरफ स्पिन करता है और जिस गति से, आलोक की गति से, यानी कि 186,000 माइल्स पर आवर और 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड, जो कि फिजिक्स क्वांटम थ्योरी का जो ये है। सो इसके साथ एक तुलनात्मक डिस्कशन में करूँगा। हमारे जो आत्मा, जब अभी हम जो आत्म स्वरूप में रहकर जो सोल आत्मा जब सेल्फ रियलाइजेशन आत्मस्वरूप का करता है और तुरंत बेहद की कला ब्रह्मांड में बेहद की रचनात्मकता के द्वारा जो एमर्जिंग पावर के द्वारा जो अपने आप को एक क्वांटम लीप, एक क्वांटम जंप के तरह बेहद की कला के ब्रह्मांड में पाता है और वहाँ से अपना सोल आत्मा सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, परम महाकारण शरीर को चार्ज करता है करके ये निरंतर ये करते हैं योग, बेहद योग में, और अपने आप को शरीर, बॉडी, एक मैटर को भूल जाते हैं, अपना लाइट स्वरूप को, ओरिजिनल स्थिति को हम याद करते हैं। सो द अल्टीमेट एम ऑफ बेहद ज्ञान बाय बापूजी इज टू अचीव सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन leading to global transformation by realizing the Atma Swarup, that is Nirakari Swarup, soul centric, not body centric, on planet Earth. And the soul should traverse at a bosonic speed, up very high speed, quantum speed, to position itself in front of the Param powerhouse, where the soul receives the continuous flow of energy, where the soul modulates its siddha sankalp of बेहद की परम शांति, which is transmitted all around in the infinite universes. Being in a state of combined state of Akari, Sakari, Akari and Nirakari Swarup, the combined state. The prime importance is the Nirakari, the light Swarup, the soul centric, and the Akari Swarup. The soul extracts the power from the Behad Kala Brahmand through the process of Raja Yoga visualization and emerging processes, techniques from the Param powerhouse, the Behad Kala Brahmand, by staying connected at all times in a state of realization of light body, that is soul centric method of Atma Swarup. There is a this thing, if we compare in a quantum theory, the by thinking you manifest. आज पर बापूजी ज्ञान
there are infinite creations are possible through the sankalp of various creators. जैसे महाशिव ने सोचे कि मैं अनंत अनंत बन जाऊं, परम महाशिव ने सोचे लाइक दैट। बापू जी के जो ज्ञान में जिस तरह है, दैट मीन्स वेरियस क्रिएटर्स इन निराकारी फॉर्म, वॉट एवर द संकल्प्स दे थॉट, दैट हैज़ बीन कन्वर्टेड इन द मैटर। यानी कि लाइट से ही मैटर बना हुआ है। द क्रिएशंस थ्रू थिंकिंग, एज पर आवर एंशियंट योगिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी, perfect thought manifest itself into matter. The that means here when we say the thinking, the thought process is converted into matter. In physics or your quantum mechanics, we say the wave dynamics becomes पार्टिकल डायनामिक्स। पार्टिकल मतलब अणु परमाणु जैसे जिसको बोलते हैं। द कंप्लीट आवर थॉट प्रोसेस मूव्स इन द एनवायरनमेंट, इन द वायु तत्व, द एनवायरनमेंट इन ए वेव फॉर्म्स, सो दैट थॉट प्रोसेस is converted into the wave dynamics, become particle dynamics. That is, waves floating in space coagulate into matter. As a observer means here हम अगर सोचेंगे this is soul. When you forget your body, you are the soul. Now you will visualize as an observer, being soul centric, look through visualization at the wave which collapses into matter. जैसे हम बोलते हैं थ्रू आउट 24/7 निरंतर हमको याद करना। थिंक ऑफ बेहद की परम शांति विथ फोकस कॉन्शियसनेस नोन एज सिद्ध संकल्प, which converts or collapse that thought into the material or the tattvas purification, the reality. इन ज्ञान मार्ग में हम क्या कहते हैं, जैसी दृष्टि ऐसी सृष्टि, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। दैट मीन्स यू कोलैप्स द मैटर इनटू अनदर रियलिटी। The time, hence the creation through thought process doesn't take too much of time, because you feel when you connect yourself to the Almighty Authority, you are so much conscious level, the vibration, the thought process, it is at a very higher state, and you forget your everything, and the time, even hours together you are sitting in, but if you are more focused, you will be feeling the time is shrinked into seconds. So इसको बोलते हैं समय की समीपता। So अभी बेहद की समय चल रहा है बापू जी के ज्ञान हिसाब से, जो कि अभी बेहद अंतिम समय है। अंतिम समय का रियलाइजेशन कोर्स जो हमको बेहद की जो अनुभवी मूर्त आत्मा बनना है, और रियलाइजेशन प्रोसेस को बहुत पावरफुल करना है। और यहाँ बेहद की समय है, बेहद की घड़ी जिसको बोलते हैं। सो यहाँ जो हम अपने संकल्प, शुद्ध संकल्प की जो स्पीड, जो इलेक्ट्रॉनिक, जो एज ए स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, द आत्मा, द ओरिजिनल स्टेट, यू थिंक दैट यू आर ए इलेक्ट्रॉन, योर थॉट इज राइडिंग ओवर द इलेक्ट्रॉन and moving at a very high speed. That's now if you think to focus at a quantum level, that is at the speed of light or the speed of electron going around the nucleus, ride on the electron, you should ride on the electron, that means as a soul, and pick up the speed of the electron, the thought on the electron spinning at the speed of light. The thought will acquire the speed and power of electron, then the thinking is effective and intelligent. जिसको हम बोलते हैं कि निष्काम कर्म। यहाँ जो है चिंता, कोई भी कर्म फल की चिंता ना करो। दैट मीन्स योर थॉट शुड बी ए वेरी प्योर एंड इट शुड बी एज ए कर्म योगी। यू डोंट बदर अबाउट द रिजल्ट, द रिजल्ट विल फॉलो इफ योर संकल्प and your soul has attained that power, and the sankalp has got the automatically the power and speed to be converted into matter, or the tattva parivartan or the swa parivartan, which leads to behad ke vishwa parivartan. The moment you put
this idea into your consciousness, your DNA responds, your gene responds. They will create another reality and upgrade your soul. The moment you become conscious, you become an electron, like an electron at the smallest, very सूक्ष्म जिसको बोलते हैं. Then you need not to wait for a long time. Then think becomes thing. THINK. Think becomes thing. THING. That means think is a psychological, but the thing is a material. That means K is converted into Z. Right? That means your thought, your sankalp is converted into material matter. And whatever you feel, whatever you think, with the powerful thought, that is being converted into the reality. We can vibrate with great intelligence, that is conscious living. Bodies, our bodies, you see, we have different people, different souls has got different type of physical body, because the body is a coagulation of our own thought process. Due to the DNA has been programmed that way, that particular way. We have not taken any step to reprogram our DNA. बापूजी के वीडियो भी इस DNA के ऊपर बहुत बढ़िया वीडियो है. इन्होंने why different people looks differently, why different people looks in a different way, different physical structure, different color. Bapuji has explained the DNA video very nicely. So it is we are just discussing about that. The body is a coagulation of our own thought process. Due to the DNA has been programmed that way. We have not taken any step to reprogram our DNA. Suppose we want to look better, we want to transform into a Dibya Sarir, from our physical body into a light body. We have to reprogram our DNA. Reprogramming is possible by riding on the electron. That is, just by thinking about high speed electrons, you become as you think. Not as a body, as a soul, the light source, which is 1/1,000,000th of a hair tip. When you identify yourself with the electron, you manifest yourself. This is a continuous lifetime practice, may be required to achieve the required state of vibration. The best method is to have collective evolution. That means collective behad combined yoga practice. We do the meditation process of thousands of people grouping together and meditating. That is the riding the electron at a very high speed of light, creating the vortex of energy. You can change the complete tattvas and the environment. So collective vortex, the energy, the aura, and the speed, the power, you achieve everything by the collective meditation and spreading the vibes of बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है महाशांति है महाशांति है. As we know, our mind is like a monkey, sluggish, and is the key culprit. Here we have to मन को साइड करके हम जो मन को पहले फिजिकल बॉडी एंड द माइंड थॉटलेस, बापूजी ने बोला है संकल्प, जैसे आपकी यू हैव टू बी ए थॉटलेस प्रोसेस स्टेट टू गेन द पावर, द आत्मिक पावर. बट द संकल्प, द शांति, परम शांति संकल्प which you have to spread, which is superimposed above the high power radiation which you are receiving from the Param powerhouse. That is very key. Here the capital is the consciousness. That means soul capital. The capital not your bank account capital. It is the soul capital, जिसको हम बोलते हैं ज्ञान मार्ग में बेहद ज्ञान धन. The spiritual enlightenment is possible by soul capital, not through your bank account or any other materialistic capital, what we say. Now you have to step out of your mind and ride on your soul. The more focused you are, the wave will be collapsed into matter, tattvas and environment. The collective Behad Yoga is vital to delete all the negativity in the environment
to reach the Bapuji's transformation is. So this is very important. The ultimate aim of Bapuji, we collectively have to meet the basic requirement of the Gyan, Yoga, Seva, Dharana, strict discipline and the quality level of spiritual quality to attain this transformation is. So here we say, I can repeat this, the more focused you are, the more focused we are, the wave will be collapsed, our thought waves will be collapsed into matter and the Tattva Parivartan. Collective Behad Yoga is vital to delete all the negativity in the environment to reach the transformation state. Our body throughout the complete since our birth, the body has frozen, rusted and will not sustain the high speed thought in a quantum level. Then it will turn into light, the karmatit stage as per Bapuji's Behad Gyan. The body has to drop dead or turn into subtle matter. Subtle matter means the light. That means the physical body, the matter into light. That is the ultimate aim. Finally, we have to meditate. I can say that we have to meditate long hours. Simultaneously, we should reprogram our DNA at a bosonic speed, moving in time, bosonic time, the high speed electron, no need to wait, only to create instantaneously when you fall into this high speed time with the thought as a karma yogi. Thank you very much. Thank you. बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है.